अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? The Thought Fox by Ted Hughes is a very important poem. Let's move toward the text of the poem. I imagine this midnight moment's forest. Something else is alive beside the clock's loneliness and this blank page where my fingers move. Acha, in these lines, poet has started the poem in the first person, and the world which is described uh, around the poet is very dark, and there is darkness, there is a forest, thick forest, and there the poet imagines in the midnight moment कि कोई और ऐसी चीज़ है, समथिंग एल्स इज़ अलाइव, जो कि ज़िंदा है, बट द पोइट इज़ नॉट श्योर कि क्या चीज़ है जो ज़िंदा है। अब यहाँ समथिंग एल्स इज़ अलाइव से मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ है जो अलाइव है, लेकिन इसके उस ज़िंदा चीज़ के अलावा कुछ और भी ऐसा है जो कि अलाइव है। नाउ मे बी दिस अलाइव इज़ मे बी द पोइट, मे बी द पोइट्स थॉट, or maybe the fingers of the poet which are moving on the page. And in these lines, we are told that the page is blank. मतलब कि शायर ने भी लिखा कुछ भी नहीं है, and he is looking forward for some inspiration or an idea through which he could write on this blank page. Let's move ahead. Through the window I see no star, something more near, thou deeper within darkness is entering the loneliness. Now you can sense the feeling of darkness and loneliness in these lines. The poet is looking outside the window where he sees no star. मतलब देर इज़ फुल ब्लैकनेस एंड देर इज़ डार्कनेस एवरीवेयर। मतलब इसका ये है, द पोइट इज़ ब्लैंक राइट नाउ and his mind is also in some kind of darkness where he is unable to produce any idea, any motivation. He is expressionless, his mind is expressionless right now, and he is unable to write anything on the blank page. He is striving for any idea, he is striving for any creativity, but right now he is unable to write anything because he has no idea, and he is looking outside the window to see any, to find any idea or any motivation or any inspiration to write on the blank page, but right now he is just failed. He says something more near, thou deeper within darkness is entering the loneliness. He feels that something is entering in the loneliness. There is darkness, there is loneliness, but he feels from within that there is something entering in this darkness. मतलब ये कि उसका mind इस वक्त बिल्कुल blank है, just like the blank page. But he is feeling कि कुछ ऐसा डीपर है, कुछ ऐसा मोटिवेशन है, कुछ ऐसा इंस्पिरेशन है विच इज़ अबाउट टू एंटर इन हिज माइंड। अच्छा, यहाँ पे इसके अगर लिटरल मीनिंग में लिया जाए तो यहाँ बात फॉरेस्ट की हो रही है, डार्कनेस की हो रही है, विंडो की हो रही है, स्टार्स की हो रही है, बट इन फैक्ट दिस विंडो इज़ अ विंडो ऑफ द माइंड थ्रू विच ही वॉन्ट्स टू सी आउटसाइड द वर्ल्ड. Cold delicately as the dark snow, a fox's nose touches twig, leaf. Do I serve a movement that now and again, now and now and now? ये जो लास्ट लाइन है, एंड अगेन नाउ एंड नाउ एंड नाउ, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इन फैक्ट दीज आर द सर्टन स्टेजेस ऑफ पोइटिक स्ट्रगल, कि शायर को जो आइडिया फील हो रहा है, दैट आइडिया इज़ आफ्टर द एंट्रेंस ऑफ द फॉक्स नोज़. जिस तरह से एक फॉक्स अपनी नोज़ के थ्रू स्मेल करता है थ्रू द लीव्स एंड ट्विग्स. ट्विग कहते हैं लकड़ी को ना, छोटी छोटी लकड़ियाँ जो जंगल में गिरी होती हैं, और डार्क लीव्स, ड्राई लीव्स, वहाँ फॉक्स जो है वो अपनी नोज़ के थ्रू ही वांट्स टू सेंस द endangered, मतलब कि आगे कोई ख़तरा है, या थ्रू हिज नोज़ ही कैन स्मेल द फूड
इफ़ ही इज़ स्टार्विंग तो उसको फूड के लिए या अगर किसी डेंजर से बचने के लिए ही यूजेस हिज नोज़, और उस नोज़ के थ्रू उसको मोटिवेशन मिलता है कि वेदर आई एम गोइंग टू बी endangered और एम आई गोइंग टू हैव सम फूड. सो इज़ द पोइट, कि जिस तरह से एक फोक्स अपनी नोज़ के थ्रू सेंस कर लेता है कि अब मेरी डेस्टिनेशन क्या है और मुझे आगे क्या मिलने वाला है. सेम इज़ द केस विद द पोइट. ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज़ एंटरिंग इन टू हिज माइंड, and that is the process is very slow, and that process is again now and now. They are the stages of the poetic struggle. Finally, the poet, with the entrance of the fox, is able to find some idea or some poetic spur to write on the blank page. Sets neat prints into the snow between trees, and verily a lame shadow lags by stump and in hollow of a body that's bold to come. अच्छा, अब हमें दिखने में ऐसा ही लगेगा कि जैसे एक फॉक्स, ही इज़ एंटरिंग इनटू द फॉरेस्ट, एंड दैट इज़ अ स्नोई नाइट. स्नो इज़ एवरीवेयर. जहाँ से वो फॉक्स गुजरता है, एंड ही हैज़ द फुटप्रिंट्स ऑन द स्नो. इसी तरह से जो राइटर है, जो पोइट है, उसके जो माइंड में जो आइडिया आया है, दैट इज़ ऑल्सो creepily enters the mind and leaves its footprints on the thoughts. Next is across clearings an eye, a widening, deepening greenness, brilliantly concentratedly coming about its own business. अच्छा जी, अक्रॉस क्लियरिंग्स एन आई, इसका मतलब ये है कि द फॉक्स व्हेन ही एंटर्स द फॉरेस्ट, सबसे पहले तो ही कॉशियसली स्मेल्स एवरीथिंग, स्मेल्स द डेंजर, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जिस पाथ में हूँ दैट इज़ डेंजरस फॉर मी. एंड व्हेन एवरीथिंग इज़ क्लियर, तो एन आई अक्रॉस क्लियरिंग्स एन आई, इसका मतलब ये है कि हम उसको देख सकते हैं. मतलब कि वो फॉक्स जो है वो शेडो से निकल कर हमारे सामने आ गया है. In fact, that fox is an idea, and now the obscurity is coming to an end. अगले वर्ड्स देखिए ना आप, a widening, deepening greenness, brilliantly concentratedly coming about its own business. जिस तरह शुरू की लाइंस में हमें ये नज़र आया कि डार्कनेस थी, there were no stars on the sky, and there was darkness, there was a very creepy atmosphere. But right now, in these lines, the poet has told us that now the things are going to be clear. The greenness of the plants and the trees is going to be vivid. There is brilliantness. Everything has become brilliant and glaring. Now we can see the idea. Now we can have the idea. I mean, the writer, the poet has the idea that about which he has to write. He is very clear now. His mind is clear, that is no more obscure. Obscurity has come to an end. Now, as the poem is moving towards its end, the writer is also going towards the end of the poem. In these last lines, the poet says, till with a sudden, sharp, hot sting of fox, it enters the dark hole of the head. The window is starless still, the clock ticks, the page is printed. The last line is very important, underline कर लीजिएगा इसको. The writer says, the poet says कि I can feel the strong and hot stink of fox. जिस तरह से अब राइटर को फॉक्स की स्टिंक फील होना शुरू हो गई है, सो एज द आइडिया, सो एज द क्रिएटिविटी, इट एंटर्स डार्क होल ऑफ द हेड. यहाँ इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पोइट के हेड में एक होल हो गया है और उसके अंदर जो डार्कनेस थी वहाँ पे लाइट एंटर हो गई है. नो, इसीलिए मैं कहती हूँ द पैराफ्रेजिंग ऑफ एनी टेक्स्ट इज़ वेरी डेंजरस. उसका सारा फ्लेवर, उसका सारा जो मज़ा होता है वो ख़त्म हो जाता है व्हेन वी गो फॉर द lafaz by lafaz meaning of any text. So don't go for that. Just hit the idea that what the poet in fact wants to convey you.
आप इस पे गौर करें। द विंडो इज स्टारलेस स्टिल, द राइटर सेज कि विंडो तो अभी तक स्टारलेस है। द क्लॉक टिक्स, क्लॉक भी अभी तक चल रहा है, but the page is printed. It means that I have got an idea and now my page is no more blank, the page is printed. In fact, in the whole poem, the poet is of the view that it is not easy to have any piece of creation. The creativity demands an agonizing process. It is not any flow of imagination कि कुछ भी जहन में आया और पोइट्री हो गई. Poet in fact sets an inspiration from outside, but he has to make an effort to write with his own will. Actually, there is no any fox, and this is very important कि हम पूरी पोइम में समझते हैं कि शायद एक फॉक्स आया, उसको पोइट ने देखा